Good morning, everyone. Today I am Ashish Singh. Welcome to all of you in my channel Pharma Accelerator. Now I would like to come with new topics. What is the regulatory guidelines and what are the regulations? What are the important in our pharmaceutical industries? Okay. So this is a very most important topic. Role of regulatory countries and guidelines in pharmaceutical industry. It play a pivotal role in executing pharmaceutical industry and business and global healthcare system. रेगुलेटरी गाइडलाइंस मीन्स कि आप समझो कि जो अदर कंट्रीज़ है जहाँ पर हम अपने ड्रग का बिजनेस या व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या अन्य सेल्स से रिलेटेड मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें मतलब गवर्न करती है उसके लिए एक स्पेसिफिक दिशा निर्देश बनाए गए हैं जिसके लिए कुछ खास कमेटियाँ गठित हुई हैं। इन कमेटियों के माध्यम से हम जो फार्मा में है उनके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन प्रोडक्ट की हम लोग मार्केटिंग करते हैं, उन प्रोडक्ट की हम लोग रिसर्च करते हैं। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब किसी भी चीज़ को या किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए रेगुलेशंस होने ही चाहिए, क्योंकि ये कंसर्न ऐसा कोई आप ऑर्डिनरी थिंग्स नहीं है कि जो सेल कर रहे हो। ये कंसर्न रिलेट है इंडिविजुअल हेल्थ और सेफ्टी के साथ, वो भी ग्लोबल लेवल पे। मीन्स कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो और इंडिया है वो मेडिसिन सप्लाई करने की कैपेबिलिटी रखता है और उसके लिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेबल इन्वायरमेंट है, स्पेस है, प्रॉपर मैन पावर है, टेक्निकल स्किल्स है। ये सब चीज़ें होने के बावजूद हमें क्या चीज़ें मतलब फॉलो करनी चाहिए टू कंप्लायंस लेवल इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू फॉलो द रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट कंट्रीज़। आप यूएस के लिए अगर कोई मीन्स ड्रग सप्लाई करते हो तो उसके लिए एफडीए गाइडलाइंस हैं, एंड ब्राज़ील के लिए करते हैं देन वीज़ा है, कनाडा के लिए कनाडा हेल्थ है, और यूरोप के लिए ईएमई है, यूरोपियन मेडिकल ऑफ एजेंसी। दीज आर द गाइडलाइंस, दे रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, risk assessment, how the drug are evaluated, how drug are the specified, how drug are the developed, how research is going on in right track. So before discussing, we are know what was the main motto of these regulations and regulatory guidelines. First, to impact the quality. Second one is the safety. Third one is the efficacy of drug. To access quality, safety, efficacy in multidisciplinary area, in short QSEM guidelines. So under these guidelines we are studying the stability study of drug substances and drug product, and what are the analytical key parameters to perform the validations, and what are the roles performing the major qualitative or quantitative tests to evaluate major quality functions of drug parameters. It includes description, identification, physical evaluation and chemical evaluation and microbiological evaluation. In these evaluations we access the criteria how to drug is specified and how its importance in regulatory markets. So they align with certain life cycle, they align with quality risk management, they align with development tools, they align with the good practices, good manufacturing practices, good laboratory practices, good clinical practices, and regulatory. After the drug we are going for the product development, gone through the validation, then commercialization. After commercialization it comes to the market, then take the feedback. There pharmacovigilance department work to monitor the adverse reaction and what are the patient's efficacy provides into the market. In their safety concern they will respond to the manufacturer, also the manufacturing units, and the certain regulation and guidelines based on the quality, safety, efficacy medicine. All agencies are doing certain audits to check their product parameters and what are the quality governing with the pharmaceutical industry, and how they adopt digital transformation in this era to replace manual transformation by the AI generated tools
like some software, machineries, equipments, and AI technology introduced for the product development, drug discovery. So the regulation for doing the things in proper manner is very important to each and individual us to access the good practices in the pharmacy. So I humble request to all professionals, either it is in industry, either in college, or students, or any of them, must go through the regulatory guidelines, each and apply in their applicable fields, and provide a great support to the global healthcare system in our regulatory countries. So from these, I wind up my words and going to share this fruitful knowledge to all of you. And we are discussing the quality, safety, efficacy guidelines one by one in different topics and seminars. So it will be a great achievement to all of you that you are seeing all the things in one platform, that is our Pharma Accelerated channel. Hope for your kind support and nice gesture during the watching of the channel, and support in all ever what you can the best to you and your community and your country and for the regulatory countries. From these words, I am signing off my topic. Thank you. We will meet you soon with next topic. Have a great day. Thank you.